Today we are going to start oscillations. We have now waves and oscillations. So first of all, I am going to start oscillations. Waves and oscillations. Okay. So oscillation, you know very well. Oscillation, vibration. Number of times you have maybe listen or maybe learn about these words. So any motion which repeats itself after a particular interval of time again and again, that is known as periodic motion. Periodic motion. First of all, periodic motion is very important here. What is periodic motion? A motion which repeats itself again and again after a particular interval of time is known as periodic motion. And number of examples are here for periodic motion. That is motion of planets or Earth around Sun. This is a periodic motion. Then motion of a pendulum. Motion of a pendulum in a clock. क्लॉक में आपने देखा होगा ना पेंडुलम ऐसे हिलता है, पीरियोडिक मोशन है. देन मोशन ऑफ मून या रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ. अर्थ के अराउंड घूमता है मून 27.3 days, right? Then rotation of earth on its axis also, this is periodic motion. इसलिए दिन में 24 घंटे होते हैं. ऐसा नहीं कि बोले आज 36 घंटे हो गए, आज 40 हो गए, आज 4 ही बचे. ऐसा नहीं होता. यानी रोटेशन ऑफ अर्थ और प्लैनेट्स ऑल्सो, एनी अदर प्लैनेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस के अबाउट हो सकता है. देन motion of a vertically loaded spring. Vertically loaded spring. एक स्प्रिंग है आपके पास, उसके नीचे वेट लगा दिया और खींचा और छोड़ दिया. Vibration starts. These are vibrations. Periodic motions are there. Second, we have और नंबर ऑफ अदर एग्जाम्पल्स आर देयर. मैंने तो बहुत ही कम एग्जाम्पल दिए आपको. यू नो मे बी नंबर ऑफ मोर एग्जाम्पल्स हियर. सो सेकेंड टाइप ऑफ इन ऑसिलेशन, सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. ऑसिलेटरी और vibratory motion. So in an oscillatory or vibratory motion, it is a to and fro motion or back and forth motion about a fixed point that is known as mean position, just like a simple pendulum. The simple pendulum mein this is known as mean position, and when you displace it to one of the extreme position and when you release it, it comes back and moves towards the other side and motion repeats itself. बार बार होता रहेगा पेंडुलम. यानी to and fro and back and forth about a fixed point mean position. That is known as oscillatory and vibratory motion. Oscillatory or vibratory motion. It is also a periodic motion. It means every oscillatory motion is a periodic motion, but every periodic motion is not an oscillatory motion. कि अर्थ अगर रोटेट कर रही है ऐसे धीरे धीरे एक्सिस पे, तो ऐसा तो नहीं वो ऐसे 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 घूम रही है बार बार. नहीं, ऐसे थोड़ी होगी, आगे पीछे नहीं होती. सो इफ यू वांट यू कैन राइट it is to and fro motion. It is to and fro and
and back and forth motion about a fixed point called mean position. So it is a periodic motion. It is a periodic motion which is to and fro and back and forth about a fixed point called mean position in regular interval of time. Yeah, at regular interval of time. So in oscillatory and vibratory motion, the body vibrates about a fixed point called mean position to and fro and back and forth in a regular interval of time. Time same होगा. ऐसा नहीं कि आपने झूला झूल रहे हैं तो झूला झूले तो पीछे बोले बहुत देर तक रहेगा और फिर आगे जल्दी से आके ऐसे आ जाएगा. ऐसा नहीं होगा. वो बिल्कुल बराबर जाएगा. Okay. So we have examples, that is motion of pendulum. देखो, motion of pendulum means oscillation of pendulum. We can also say that oscillation of pendulum. Then motion of a swing. Swing झूला सभी को पसंद है. जब गर्मियां आती है तो कहते हैं सावन आया तो झूले डालेंगे. गाने भी आते थे कि सावन के झूलों ने मुझको बुलाया. तो लड़कियों को बहुत पसंद होता है झूला झूलना. और हाँ सर, एक वाला गाना भी तो सावन में लग गया. बस 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 ये वाला मत सुना भाई. ये वाला नहीं चाहिए. ये नहीं चाहिए. ये दूसरा है. कौन आ गया ये? Any other example? Yes. Motion of a liquid. Motion of a liquid in a U-tube. If U-tube is there, U-tube means the tube is like U, not YOU. Then motion of a vertically loaded spring. Vertically loaded spring. This is also oscillatory motion. Then motion of a floating cylinder. Motion of a body in a tunnel passing through the diameter of Earth. If you dig a tunnel passing through the diameter of the Earth, and if you drop anything, any object, any body here, it is executing simple harmonic motion or oscillatory motion. So always remember, every oscillatory motion is a periodic motion, but every periodic motion is not an oscillatory motion. Correct? एक और बहुत अच्छा मोशन होता है oscillatory में ही, and that is similar to oscillatory motion, but in that one particular condition is very, very important, and that is simple harmonic motion. Simple harmonic motion, SHM, simple harmonic motion. It is also oscillatory motion, and here the body again returns back to its mean position due to restoring force, and restoring force and acceleration is always directly proportional to the displacement and directed towards the mean position. कैसे? देखिए, this is pendulum, and when pendulum goes to this extreme position, then here now what happens? The body again wants regain its original position, mean position, due to a restoring force, and this is suppose displacement y. So the restoring force acting in the opposite direction, which is equal to F proportional minus y or A proportional minus. So if such type of motion is there, that motion is known as simple harmonic motion. So you can write maybe simple harmonic motion is an oscillatory motion
simple harmonic motion is an oscillatory motion such that the restoring force or acceleration is directly proportional to the displacement and always directed towards mean position. So in a simple harmonic motion, it is an oscillatory motion in which restoring force is directly proportional to the displacement. Acceleration is also directly proportional to the displacement and directed towards the mean position. Always directed towards the mean position. This is simple harmonic motion. So we are discussing simple harmonic motion in 11th class. So we have to find the velocity and acceleration when a particle is executing simple harmonic motion. So this is very, very important. तो मैं आपको बता रहा हूं हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन. कंडीशन आप समझिए गए. कंडीशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज टू एंड फ्रो मोशन. नंबर 2, acceleration or force is restoring force is directly proportional to displacement and in the opposite direction, any directed towards the mean position. Correct? So velocity and acceleration in SHM ये हम निकालते हैं आज. ठीक है. So suppose this is a unit circle of radius r maybe and a particle is moving with velocity omega, reference particle. तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये एक्सिस हो गई. देखिए x एक्सिस, x dash, this is y dash. So if particle is at point B after time t, then the angular displacement is theta angular displacement हुआ. So I draw a perpendicular here and this is y coordinate and this is x coordinate, bm कह दिया मैंने इसको. करेक्ट. ये O है मेरा सेंटर, ये y हुआ. So I think you are getting when particle is here, then after some time particle is here at B dash. तो ये देखिए ये क्या हो गया. O is mean position, this is one of the extreme position, this is another extreme position. And so it is a simple harmonic motion. Particle here, तो यहाँ भी एक point होगा. Here, तो यहाँ भी एक point होगा. It means always it has two extreme position and O is mean position. So the motion of a particle on a circle at the circumference of a circle also behaves as a simple harmonic motion. And we have to find velocity and acceleration. And you know very well velocity is displacement upon time. तो जब तक displacement यानी position नहीं होगी आपके पास तब तक आप नहीं निकाल सकते. So we have to find the coordinate of particle when particle is at point B. Okay? तो देखते हैं हम लोग. Consider a unit circle of radius r. ऐसे यूनिट सर्कल है तो उसकी रेडियस 1 होती है तो मैं यूनिट नहीं लेता. चलो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे. Consider a circle of radius r. Let
A particle of mass m is moving on the circumference. ये रेफरेंस पार्टिकल है. कौन सा पार्टिकल है? रेफरेंस. That a reference particle of mass m is moving on the circumference of circle with angular velocity ओमेगा. ओके, लीनियर वेलोसिटी v होगी, हमको पता ही है. आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम इंटरवल t, let position of particle is at b, x comma y. It means we have to find the coordinates x comma y. करेक्ट बच्चों? सो ट्राइंगल बनी गया हमारे पास. ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ BM, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर OA. ठीक है ना? सो इन ट्राइंगल BOM. So first I am taking cos theta. Cos theta is base upon hypotenuse. और ये जान के आपको वैसे आप जानते हैं, because already we have completed in vectors. वही केस आने वाला. base is x and hypotenuse is r. It means x is equal to r cos theta. Similarly, y equal to r sin theta. अब ये थीटा को थोड़ा अच्छा कर लेते हैं. थीटा इज ओमेगा टी. वाई? बिकॉज मैं लिख रहा हूं कि ऐसा मैंने क्यों किया है. Because you know very well, angular velocity is angular displacement upon time. So theta is equal to omega t. Because sometimes the students they are asking कि यार ये कैसे ले आया सर आप? तो देख लीजिए आप. ओमेगा is equal to theta by t और delta theta upon delta t. So theta is equal to omega t. So now we have x coordinate and y coordinate. It means displacement along x-axis and displacement along y-axis. So we can easily find velocity, maybe along x-axis, along y-axis. But you know very well velocity is tangential here. ये tangential होगी. इतना तो आपको पता ही है. Correct? So now, if you have any doubt, please ask. अगर नहीं है तो आगे चलते हैं. No? Okay. So first I am finding now velocity. ये मिटा देता हूँ, चलो बाद में काम में लेंगे. सुहाना सफर देखो भाई कौन है ये गीतकार हमारा. सर एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है अपने यहाँ. क्या हो रहा है? एक प्रांजल सिंह 11 नाम से बहुत बार आया जा रहा है मीटिंग में. मेरे को मीटिंग लॉक करनी पड़ेगी सर. हाँ कर दो. किसी ने उसको लिंक दे दी तो ऐसे ही आ रहा है बिना कुछ. कोई बात नहीं, तुम तो क्या करो कि या तो फिर सबको म्यूट करना पड़ेगा. कोई बात नहीं, बच्चे होते हैं ऐसे करते हैं. So velocity. Velocity we are finding. So we know
velocity is dx upon dt or dy by dt. Anything we can take. I am taking dy by dt. And y is r sin omega t है. कितना y मेरा? r sin omega t. Already we found. So v is equal to d upon dt of r sin omega t. R is here outside and this is sin omega t. So why r is outside? Because we have to differentiate with the help with respect to time, and r is irrespective of time, so r is a constant. Now we have to differentiate it. Differentiation का फार्मूला बताता हूँ. d upon dx of sin ax is equal to a cos ax. आपको याद होगा. Actually first we have to differentiate sin. तो sin का differentiation होता है cos omega t, and then we have to differentiate omega t, तो omega आता है. This is a chain relation, और chain reaction तो नहीं है, relation ही कह सकता हूँ. So here now बेचारे बच्चे को YouTube पे गाना गाना चाहिए, इतना अच्छा गाना गा रहा है. हमें सुनाने से क्या फायदा बेचारे, है ना. उसका जो भी साथी है उसको बोलना YouTube पे डाल यार बेटा, तो लोग खुश हो जाएंगे देख के, बोले वाह कितना मधुर गाता है. So V equal to r omega cos omega t. This is my equation number 1. This is velocity, but nobody is happy with this. लोगों को ये अच्छा नहीं लगा. क्यों अच्छा नहीं लगा जरा बताओ तो कृष्णा, ये क्यों पसंद नहीं है? Because हमारा y था sin omega t में था, हमारा काय में था sin, and this is in cos, so we want our result in sin only. तो मैं कन्वर्ट करता हूँ, and you know very well sin, how to convert cos into sin. Cos square theta plus sin square theta equal to 1. So cos square theta equal to 1 minus sin square theta. So cos theta is equal to under root 1 minus sin square theta. Correct? So this is under root 1 minus sin square omega t. Okay. So r omega under root 1 minus. अब जैसे ही मैंने sin omega t को देखा तो मैंने यहाँ देखा sin omega t is y upon r. देखो sin omega t is y upon r, यहाँ रख दिया मैंने, y square upon r square. So v is equal to r omega under root LCM ले लिया, r square minus y square upon r square. So r square is outside, r आ गया. This is under root r square minus y square. R. It means my velocity formula is omega under root r square minus y square. Velocity in SHM. This is velocity in SHM, omega under root r square minus y square. Where omega is angular velocity बच्चों, r is radius यानी maximum displacement amplitude. It is amplitude. And y is displacement. जैसे आपका this is a pendulum और pendulum यहाँ तक चला गया है, ये maximum, ये y है मान लो, और pendulum यहाँ तक जा सकता है. So this is r, maximum displacement. Correct? Now we have to find what is the velocity at mean position, what is the velocity at extreme position. और ये हमको सिखाएगा कि यार असलियत में हो क्या रहा है. तो देखिए स्पेशल केस ले रहा हूं मैं यहाँ, इसको तो मिटा देता हूँ. सर 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट. अच्छा.
सर ये ओमेगा लिख लो। ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, नेगेटिव में भी जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं, बट यू नो वेरी वेल काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव, सो देन देयर इज अ प्रॉब्लम. Okay, so here I am taking now special cases. So special cases means velocity at mean position. First of all, what is the value of velocity at mean position? तो देखते हैं जरा mean position पे क्या आती है velocity. Mean position means here, and at mean position displacement is 0. अरे बॉडी तो ऐसी खड़ी है, जब बॉडी इधर जाएगी या इधर जाएगी, then there will be displacement. Okay, so at mean position y is 0, so v mean equal to omega under root r square minus 0 square. So v mean equal to omega r, that is maximum velocity. अब आप कहोगे मैक्सिमम कैसे हुई, अभी बताता हूं आपको. सेकेंड, ये तो मिटा दी. Velocity at now extreme position. Velocity at extreme position. So at extreme position y equal to r, it means maximum displacement. So v extreme equal to omega under root r square minus y square भी r square हो गया. So this is 0. It means at extreme position velocity is 0. अरे 0 नहीं होगी तभी तो वापस आएगी, नहीं तो वापस कैसे आएगी. So क्या होता है कि when it is at extreme position, then here velocity is 0. So it comes back, return back. It returns back, and at mean position now velocity is maximum. And as velocity is maximum here, the body is, pendulum is moved to the next position, next extreme. फिर यहाँ जाएगा तो velocity is 0. Then again it's returned back. And this process continues. It means at extreme position velocity is 0. आप झूले में झूल रहे हो, तो झूले में जैसे ही आप ऊपर पहुंचोगे पीछे, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं और बहुत इंफिनिटी पे चले गए, वापस आना है. तो वापस तभी आओगे when velocity is 0 at extreme position. फिर आप आओगे तो आके रुक थोड़ी जाओगे, ऐसा झूला झूला आगे जाएगा. Why? Because velocity is 0 at extreme and it is maximum at mean position. So swing again, move to the other extreme position. Okay, बच्चों? And Yes. if velocity is changing here, surely there will be acceleration. बिना acceleration के नहीं हो सकता, क्योंकि direction भी change होगी तो भी acceleration होगा. So now we have to find acceleration in SHM. Okay, ये मिटा देता हूं. So how to find acceleration now? In order to find acceleration, you know very well acceleration is rate of change of velocity. क्या होता है acceleration? Rate of change of velocity dv by dt. So we know acceleration equal to dv by dt, and v already हमने निकाला था r omega cos omega t. So acceleration equal to dy by dt r omega cos omega t. So r omega is constant and differentiation of cos is minus sin होता है, आपको याद होगा. Minus sin omega t and omega t का क्या आएगा, omega. So minus
आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये तो बहुत बढ़िया हुआ, ये तो साइन में ही आ गया, हमको साइन में ही चाहिए था। एंड साइन ओमेगा टी इज वाई बाय आर, सो आर आर आर, so acceleration is equal to minus omega square y। आप कहेंगे देखो सर कितनी बढ़िया चीज आई, इसने एसएचएम को प्रूव कर दिया। कैसे कर दिया देखिए, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड इट इज कांस्टेंट हियर, सो a is inversely proportional minus y। It means acceleration is directly proportional to displacement and in the opposite direction of displacement, that is towards the mean position. So this is a simple harmonic motion and this is the condition of SHM। याद रखना जहां भी ये आ जाए, this is the condition of SHM। Okay, so now there is a question in our mind, what's the value of acceleration at mean position and at extreme position? देखते हैं। So mean position पे y is 0, it means acceleration is 0। सही बात तो है। अरे at mean position velocity is maximum, when velocity is maximum then there is no acceleration, because acceleration is there when there is a change in velocity। तो जो चीज मैक्सिमम हो जाए उसमें कुछ चेंज थोड़ी होता है। तो when velocity is maximum, acceleration is 0, and when velocity is 0 then acceleration is maximum। अभी आएगा देखना। So number 2, ये कौन सा आया था मेरा, a mean आया था, a mean is 0। Similarly सर वहाँ पे v तो मैक्स होगा ना, आपने 0 लिखा है। कहाँ पर, यहाँ अरे 0 mean होगा ना position बेटा, पे। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन इज 0। सर बट वेलोसिटी पे वेलोसिटी 0 तो लिख दिया मैक्सिमम, आपने। आपने वेलोसिटी मैक्सिमम तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा सर, बट आपने वेलोसिटी वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं 0 लिख के 0 लिखी है। लिखी है। ये मैंने y0 लिखा है, y है ये। ओके सर, सॉरी सर। है ना, मीन पोजीशन पे y0 है। क्या 0 है, y मीन्स डिस्प्लेसमेंट। अच्छा वो छोटा सा हो गया था, देयरफॉर a मीन इक्वल टू 0 एंड नाउ सेकंड एट एक्सट्रीम पोजीशन। So at extreme position y is equal to r, so a extreme equal to minus omega square r, that is maximum। अब दिख नहीं रहा होगा आपको, अभी दिखेगा, ये दिखा। So look here, at mean position displacement is 0, when displacement is 0 acceleration is also 0 here, okay, and at extreme position y is displacement is maximum, that is equal to r, so a extreme equal to minus omega square r, that is maximum, that is maximum। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पेंडुलम था आपका, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, ओके, एंड हियर वेलोसिटी इज मैक्सिमम, यानी एक्सेलरेशन 0 होगा। हियर वेलोसिटी इज 0, it means acceleration is maximum and acceleration is minus, यानी in the opposite direction of displacement। तो तभी तो displacement इधर हो रहा है, acceleration इधर लग रहा है, तभी तो बॉडी वापस आएगी। acceleration उसको वापस लेके आता है, okay, and when body oscillates, so there is a question in your mind कि ये कितना टाइम पीरियड ले रही है इधर से इधर आने में। होता है ना, छोटे बच्चे को भी आपने देखा होगा, मम्मी जो है झूला झुलाती रहती है या पैर में रस्सी बांध लेती है तो उससे झुलाती है, तो बहुत सारी बातें होती हैं इसमें। तो टाइम पीरियड कितना लग रहा है, वी हैव टू फाइंड टाइम पीरियड नाउ, टाइम पीरियड इन एसएचएम।
time period in SHM. Time period you know very well. The time taken to complete one oscillation or one vibration. The time taken to complete one oscillation or one vibration. तो मैं acceleration से ही चलूंगा. We know acceleration equal to omega square y. तो बच्चे बोलेंगे सर माइनस तो लगाया ही नहीं. अरे माइनस तो एक्चुअली इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. आई एम टेकिंग मैग्नीट्यूड. सो a upon y equal to omega square and omega is 2 pi by capital T time period. So a upon y equal to 4 pi square upon T square. So T square equal to, again, in order to find time period in SHM, time period means time taken to complete one oscillation, one vibration. So we know acceleration is omega square y. I am taking magnitude, so minus is not here. Now a upon y equal to omega square and omega is 2 pi by t. So a upon y equal to 4 pi square upon t square. We have to find t. So t square is here and इनको यहाँ लिया है 4 pi square into y by. And we have to find t. So 2 pi under root y by a. Here y is known as displacement and a is known as acceleration. Also, there is one more formula, t equal to 2 pi under root m upon k, and this m is known as inertia factor, because mass is inertia depend upon mass, and k is spring factor और फोर्स कांस्टेंट. ये फार्मूला भी आपको बाद में हम बताएंगे कैसे आएगा. ओके, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू फाइंड द टाइम पीरियड. ऑल्सो सम कंसेप्ट्स आर ऑल्सो हियर. ये मिटा दूं बच्चों, लिख लिया होगा आपने. सम कंसेप्ट्स आर देयर which I think you know already in class 9th and in lower classes. That is, एक होता है आपको पता होगा wavelength, then frequency, then time period, एक और होता है phase, velocity पता ही है. So wavelength you know very well. The distance between the two crust or two trough is known as wavelength. The distance traveled by a wave in 1 second or per unit time is known as wavelength, and wavelength is given by lambda and its SI unit is meter. Now time period already we have discussed. The time taken to complete one oscillation or one vibration is known as time period, and it is denoted by capital T, और इसकी यूनिट होगी seconds. क्या होगी? seconds. Then frequency, number of vibrations per second. Number of vibrations per second is known as frequency. इसको न्यू से बताते हैं. न्यू इज 1 अपॉन टी. इसकी यूनिट होती है पर सेकेंड एवर हर्ट्ज, HERTZ. जैसे आप स्किपिंग कर रहे हैं तो एक स्किप करने में आपको एक बार 80 कूदने में जितना टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड. नाउ इन 1 सेकेंड आप कितनी बार कूदते हो, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी. इफ फ्रीक्वेंसी इज मोर, एनर्जी इज ऑल्सो मोर. तो आप याद रखें कि फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी दे आर रिलेटेड विद ईच अदर. एक और बात बताऊं आपको, देयर इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड दैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज रिलेटेड विद टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. इट इज 2 pi nu
और 2 पाई बाय टी, और इसकी यूनिट आपको पता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड. And the phase is also there. Phase means the position of a point at any instant. It is the position of a point at any instant. So phase मतलब suppose two bodies, there two particles are moving. So maybe they are moving together. So theta is 0, that is phase is 0. But maybe one is 90 degree ahead or 45 degree ahead. So that is the, जैसे reference circle पे एक particle पीछे और एक आगे है. So there is a phase difference between them because their position is different at that particular or at any instant of time. Velocity का फार्मूला भी आपको पता है, velocity v equal to nu lambda, याद होगा आपको. इसको c भी कह देते हैं, c is equal to nu lambda. When we are taking c, it is speed of light, and when we are taking v, then it is velocity of motion of any particle, साउंड, कोई भी किसी से भी हो सकता. सो ये कुछ आपको मैंने टर्म्स बताई हैं, एंड दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू सर waves and oscillations. फेज इज, फेज आप लिखना चाहें तो लिख ले, मैं लिखवा देता हूं. लिखो. It is the state of particle. It is the state of particle regarding its position. It is the state of particle regarding its position and velocity and direction of motion regarding its position and direction at any instant of time. At any instant of time. सर एक बार और रिपीट कर दीजिए. Okay, लिख लो. The phase of a vibrating particle. The phase of a vibrating particle at any instant. The phase of a vibrating particle at any instant gives the state of the particle, gives the state of the particle as regards its position, as regards its position and the direction of motion, regards its position and the direction of motion at that instant. मैं आपको एक इक्वेशन भी बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें फेज क्या है. The equation of a wave is always given by, अगर equation of wave देखें हम, तो equation of wave is y equal to r sin omega t, a sin omega t और sin omega t, कोई भी हम ले सकते हैं. So equation of simple harmonic wave is y equal to r sin omega t plus phi naught. So here omega t plus phi naught is phase. ये phase है, and phi naught is initial phase. What is phi naught? Initial phase. So whatever be the angle there, that angle gives you the state also, and it depends upon sign. Sign maximum value you know ne +1 and minimum is -1. So sign is decided by omega t and phi naught.
So t is any instant of time. At any instant of time, if you are finding, मान लो 1 सेकंड या 2 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी. So आज इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, and then we are going to discuss applications of simple harmonic motion. So thank you very much for giving me your valuable time. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you.